Hello, my dear student. This is your Pranjit sir. Welcome back to the physics classes again. So today I am going to discuss about one relationship between resistance, internal resistance of cell, its EMF, and potential difference of cell. Okay. So in previous classes we have learned about EMF, internal resistance, okay, and potential difference in Ohm's law also. Okay. So now, can you tell me? So what is resistance? Anyone? A device that opposes the flow of current. Acha, very good. So it can opposes the flow of current. Okay. So actually, inside cell, electric cell, not human cell. Okay. Inside electric cell, there are electrolyte. Okay. So electrolyte is the main elements. Okay. So which can using as a EMF. Okay. Electromotive force. It is not only a push and pull. वो वाला force नहीं है, ठीक है. हाँ, ये जो इसका जो यूनिट है, so what is the unit of EMF? Volt. Okay, वो भी डिस्कस हो गया. And potential difference का यूनिट volt also. Okay, तो ऑलरेडी क्लास 10 में सीख लिया ना कि. अच्छा, so actually जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है EMF के अंदर, मतलब ड्यू टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. ओके, दो टर्मिनल्स होते हैं ना. क्या थोड़ा नोट क्लास 10 में सीखा ना तुम लोग, जैसे कि सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तुम लोग किया था ना कि EMF. सो नाउ, so what is the basic relationship between internal resistance, EMF and potential difference? तो स्टार्ट करो. Suppose we have one device with cell and its EMF is E. Okay, this dotted line indicates that it is cell and its internal resistance smaller. Okay, internal resistance smaller, and this is the external part of this circuit, which is suppose there is one external resistance joined between two terminals A and B of cell. Here is A point, here is B point. Okay, so this is external resistance R, flowing of electric current I in the circuit. Draw करो. फर्स्ट टाइम करना थोड़ा, ठीक है. सो ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? एक्चुअली इन मैकेनिक्स मतलब फ्रिक्शन का जो काम होता है, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी, ना कि बॉडी को रोक रखते हैं ना. मतलब बॉडी का जो मोशन होता है उसको अपोज करने का ट्राई करते हैं. दैट मीन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस का भी सेम ही काम होता है, ठीक है. सो रेजिस्टेंस क्या करते हैं? करंट का जो फ्लो होता है उसको अपोज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है. अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. ओके, तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो इलेक्ट्रोलाइट्स नेचर. ओके, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स and distance between two electrodes. Okay, one is positive, another is negative. Inside cell current is flowing from negative to positive, ना कि which is lower potential से लेके higher potential तक. In previous classes we have discussed about potential difference. What is potential difference? For moving the unit positive charge from one point to the another point, that means higher potential to the lower potential. Okay, total work done is called what? Potential difference. Okay, but in case of EMF, it is not exactly equal to the potential difference. Okay, but their magnitude value is same. So actually in EMF case it will be for moving the unit positive charge from source with respect to source from lower potential to higher potential. Okay, so opposite to the
direction of potential. Okay, so now let's start. Likho. Suppose a cell with EMF E and its internal resistance smaller. Likho. Suppose a cell of EMF E with internal resistance smaller, where resistance of external circuit, say capital R. Resistance of external circuit is capital R. Okay. लिखा तो नीचे लिखो therefore by the definition of EMF E equal to work done. EMF equal to क्या था, work done to carrying positive charge or unit positive charge जो भी लिख सकते हो, unit positive charge from A to B plus लिखो work done to carrying positive charge from B to A, उल्टा ना कि मतलब एक बार तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा आउटर सर्किट के लिए, और एक बार इलेक्ट्रॉन्स को और सॉरी पॉजिटिव चार्ज और जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको मतलब लेने के लिए तुमको मतलब बैटरी से जाना पड़ेगा ना कि बैटरी विथ सेल EMF E. सो नाउ लिखो, लिखा तो देखो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है B to A against the resistance, so it will be what, A to B जा रहे हो ठीक है, तो it will be external potential difference plus internal potential difference. Okay, 2 times वर्क करना पड़ेगा ठीक है. One will be for moving charge particle A to B against the resistance, another will be for moving charge particle against the internal resistance of cell from B to A position. Okay, so now सपोज जो आउटर सर्किट में हो रहा है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस B, जो इनसाइड द सेल हो रहा है उसके लिए B डैश लिया. ओके, तो ओहम्स लॉ अप्लाई करो, इजी है. ओहम्स लॉ अप्लाई करो तो B इक्वल टू क्या है IR प्लस B डैश इक्वल टू फॉर इंटरनल फंक्शन इट विल बी I इंटू स्मॉल r. ओके, I इंटू स्मॉल r लिखा. इसका इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको 2 दो. सो नाउ आई कॉमन ले लो, R प्लस R, ठीक है, इसको 2 मत दो अभी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, इट इज I इक्वल टू EMF अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस. ओके, देखो ध्यान से देखो, ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ना कि. सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन. एक्चुअली इट विल बी EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. ठीक है, क्या हुआ दिनेश? इट इज द टोटल करंट. ओके, सो नाउ इसको दे दो एक इक्वेशन नंबर व्हिच इज 2. अच्छा, से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हिच इज इक्वल टू V प्लस B डैश, इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 V इक्वल टू
ई माइनस बी डैश ना कि ई माइनस आई आर लिख सकता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। पहले ही कर लिया, बट इधर से करंट भी कैलकुलेट करना है, करंट के रेसिप्ट में लिखना है, ठीक है। तो करंट इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर। V इक्वल टू, देखो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आउटर सर्किट में, ठीक है, इट इज एक्चुअली EMF माइनस IR। इसे क्या प्रूफ होता है? इन आउटर सर्किट सम पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड विच इज अमाउंट ऑफ IR, ना कि IR अमाउंट पोटेंशियल उधर घट रहे, ठीक है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप, ओके। मतलब पोटेंशियल का डेथ होगा इधर, ठीक है, इनसाइड सेल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ओके। देखो inside cell there are IR amount of potential is drop. This term, okay. There are IR amount of potential is drop, which is called potential drop, which is called potential drop. Drop DROP, okay, potential drop. ओके, अच्छा, लिखा। तो करंट के रेसिप्ट में लिख सकते हो तुम, इंटरनल रेजिस्टेंस के रेसिप्ट में लिख सकते हो। लिखो अगेन, बाय सॉल्विंग द अबव इंटरनल रेजिस्टेंस का अमाउंट कितना होगा? देखो इधर से भी लिख सकते हो तुम, आई आर इक्वल टू कितना है? आई आर इक्वल टू ई माइनस बी ना, सो आर विल बी ई माइनस बी बाई आई, ना कि ई माइनस बी। आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो अभी? आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो? नहीं, आई इक्वल टू बी बाई आर लिख सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इधर देखो बी इक्वल टू आई आर ना, तो भी तो लिख सकते हो, बी इक्वल टू आई आर जानता हूँ, तो आई इक्वल टू बी बाई आर लिखा, ठीक है, बी बाई आर। सो इट विल बी ई माइनस बी आर बाई बी, ठीक है। देखो, so now there are some special case when circuit is closed or open. So in these two cases there will be some special expression. So just see. Acha. So we have what? V is equal to E minus IR, na ki? We have this equation. V equal to E minus IR. Lego special case. If circuit is open, in open condition, okay, in open condition, अगर इसको तुम ओपन कर दोगे, सेल को तुम ओपन कंडीशन में रख दोगे, दैट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ना कि? सो इन दिस केस देखो, इन ओपन कंडीशन I इक्वल टू 0, ना कि? दैट इज B इक्वल टू E, ठीक है, B इक्वल टू E आएगा। इन ओपन कंडीशन B equal to E. That means terminal potential difference in circuit will exactly equal to the EMF of cell. Okay. In this condition, no potential is dropped because circuit is now open condition. In open condition. So now 2 number case क्या होगा?
if circuit is closed, লেখো if বেশ টু লেখো if circuit is closed, that is it is behaves like a real cell, it is behaves like a real cell with some internal resistance, with some internal resistance, that means this one, okay, this one. जब करंट फ्लो होता है मतलब in which condition current is flowing through this circuit here, if circuit is closed already ना कि ओपन होने से तो नहीं होगा ना, स्विच ऑफ कर देने से ओपन हो जाते हैं, स्विच ऑन करने से क्या होगा, कनेक्शन मिल जाता है। देखते हैं ना तुम लोग बोर्ड में जब स्विच ऑन करते हो करंट कनेक्शन मिल जाता है, ठीक है सभी में। सो नाउ इन क्लोज कंडीशन, ओके, इन क्लोज कंडीशन B equal to E minus IR, that is E equal to B plus IR, ये भी लिख सकते हो। ये वाले कंडीशन से क्या मिलते हैं तुम्हें, B always less than EMF, ओके। ये जो EMF ऑफ सेल है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन विथ रेस्पेक्ट टू B, और उल्टा करके लिख सकते हो B लेस देन E, ओके। it means here EMF. Now there are some ग्राफ, ओके। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम, ये V वर्सेस E वेरिएशन, V वर्सेस R वेरिएशन, V वर्सेस I वेरिएशन तो देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ही डिपेंडेंसी, इसके ऊपर V वर्सेस E देखो, V वर्सेस I और V वर्सेस R भी हो सकते हैं, ठीक है। कैपिटल R लिखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखो 1 E versus R graph, okay, first one is E versus क्या R graph ना कि in E versus R graph if R means इसके रह सकते हैं, ठीक है, EMF and this is R, so it is showing this position, okay, लिखो। So when these conditions will be happen only, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे मिलेगा तुम्हें, if this second terms is 0 then E equal to IR ना कि मिलेगा ना। देखो तुम if from above if no current is flowing through the circuit, that means in condition of open condition ना कि in open condition I equal to 0 obviously, that means B equal to E, so B का वैल्यू क्या था IR ना, तो देखो E के साथ R क्या है, प्रोपोर्शनल है ना कि, तो इन दिस कंडीशन ये मतलब E वर्सेस R ग्राफ शोस अ स्ट्रेट लाइन, लिख लो। दैट मीन्स इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, hence EMF is independent of R, hence EMF is independent of R. This straight line indicates us this EMF is not depends on R, ठीक है। R का चेंजिंग होने में इसका कोई भी मतलब वेरिएशन नहीं आएगा ना कि, दैट मीन्स ये वाला जो कंडीशन है B इक्वल टू IR है, ठीक है, मतलब ये भी 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इफ I इक्वल टू 0 देन EMF इज इंडिपेंडेंट ऑन R ना कि, तो इधर से भी तुम लिख सकते हो E इक्वल टू क्या मिला था B प्लस IR ना, I इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इक्वल टू क्या मिलेगा 0 ना, 0, दैट मीन्स इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 मिल जाता है, वही है। दिस पॉइंट इंडिकेट्स दैट इज इन जीरो स्टेट ना कि, जीरो स्टेट देयर इज नो वेरिएशन। नेक्स्ट रोमान 2 लिखो।
रोमान 2 लिखो, V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R ग्राफ, कैपिटल R। So now we know that V equal to what? IR generally. In cell, expression of current is what? EMF by R plus R ना, यही तो था। इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय R। इसको करने के बाद देखो क्या मिलता है, एलसीएम करो अलग अलग करके R बाय R प्लस R बाय R, then it will be small r by capital R only. So we have now B equal to what? EMF by 1 plus R by R. So V versus R graph gives us what? Reciprocal. नाकी? तो now ये वेरिएशन जब तुम देखोगे ग्राफ में, it will be showing like that, okay? Along x-axis this is resistance, external resistance होता है इसका, और V is the terminal potential difference, okay? ये भी मतलब this V के बारे में, ठीक है? क्लियर? देखो ना तुम इधर इस पॉइंट पे देखो, जब EMF जीरो होने से क्या है, V जीरो हो जाता है ना, V भी जीरो हो जाता है। अगर तुम इधर एक स्पेशल कंडीशन यूज करोगे जैसे कि R, ठीक है, इफ कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r in this position where internal resistance of cell is equal to the external resistance, in this condition there will be V equal to EMF by 1 plus 1 ना, E by 2 मिल जाता है, ठीक है। दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ EMF ऑफ सेल, ओके। इन दिस पॉइंट इट विल बी E by 2, ठीक है। धीरे धीरे जब चला जाता है, जब रेजिस्टेंस आप इन्फिनिट कर दोगे तुम इन्फिनिटी में, ठीक है। हाँ ये तो गया एक सब कंडीशन, इफ R इज इन्फिनिटी देन B किसका बराबर हो जाएगा, E का, 1 by infinity जीरो ना, जीरो, that means B is equal to E. So when terminal potential will be equal to the EMF if R is very high ना कि infinity हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये EMF में आ जाता है, ठीक है। So these are some special type of graph, very much important। नहीं समझा? देखो this is equation which is made up of this B equal to IR equation से मिला। So now if capital R equal to small r, then in this condition B equal to E by 2। E by 2 कैसे हुआ, देखो E by 1 plus R by R आएगा ना, this by this 1, तो 1 plus 1 2 आता है ना, that means ये E by 2 का बराबर हो जाता है। When terminal potential will be equal to the EMF if R is infinity, R जब infinite हो जाता है infinite resistance, then B will be equal to EMF, चलो ओके। और एक ग्राफ लिखो, थर्ड नंबर देखिए लिखो, इफ नहीं V वर्सेस I ग्राफ, ये ठीक है, ग्राफ शो कर रहा हूँ, कंडीशन है। इक्वेशन से पता चलता है V वर्सेस I ग्राफ शोस एज नेगेटिव ग्राफ, ओके, क्योंकि इधर माइनस साइन है, बस स्ट्रेट लाइन मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो नाउ V वर्सेस I ना, V वर्सेस I लिखो, we know that B equal to E minus IR है, और B equal to minus IR plus E, comparing, जल्दी करो, comparing with
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ग्राफ से अगर कंपेयर करोगे तो m को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ना, gradient. It will shows us a straight line graph and where slope is negative, which is what, माइनस आर, माइनस आर, क्योंकि इधर देखो b वर्सेस i ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट मीन्स आर आई लिखो इधर, इसको देखो इसके साथ मैचिंग करते हुए देखो, y एक्सिस x एक्सिस, v इज अलोंग y एक्सिस, i विल बी अलोंग x एक्सिस, तो ड्रॉ करो, दिस इज i, दिस इज v नाकि, इट इज y एक्सिस ना, इट इज x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग तुम i को लो एंड अलोंग y एक्सिस v को लो, देन इट विल गिव्स अस m इक्वल टू माइनस आर नाकि, ये जो m इक्वल टू माइनस आर है इसको बोलता है स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, तो माइनस साइन से इंडिकेट होता है कि ये नेगेटिव स्लोप है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, लिख लो इधर, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस आर। ओके, आ सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन फॉर v वर्सेस i ग्राफ, सो व्हाट इज द स्लोप नेचर। ओके, देखो तो वीडियो कितना हुआ, जल्दी लिखा, देखो जल्दी लिखो, हाँ 26। ठीक है, तो वीडियो को क्लोज करो, लेंथ हो रही है, लेंथ होगा। थैंक यू एवरीवन।